Hello kids, welcome back to the knowledge series by Amit Publishing House. We are doing part 6 and this is the cover page of your book. Let's click our trendy way to learn computers. So children, today we are going to do chapter 5 and the name of the chapter is Introduction to Krita. So children, today we are going to learn about Krita. So let's begin with this chapter. So children, here in Krita we are going to learn how to edit the images in this chapter using the software Krita. So the chapter consists of the features of Krita. Krita is a photo editing software. With a photo editing software, a simple looking picture can be enhanced to extent that is look as if captured by an expert photographer. So what is Krita? Krita एक photo editing software है जिसमें अगर आपने editing सीख ली तो ऐसा लगेगा कि किसी professional photographer ने photo click की है. The word Krita comes from Swedish language where Kri means crayons and Rita means to draw. Krita is an open source software designed by digital drawing, photo editing and 2D animation. So these all things can be done here: digital drawing, photo editing and 2D animation. Now the features of Krita are, some of the popular features of Krita are, it is an open source software, which means that the Krita software code is available for public collaboration. So this software is open for everybody. You can easily download it from the internet and from the krita.org website. The user interface of Krita is easy to understand and use. So Krita में जो भी हमारा आप कह सकते हो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत ही यूजर इंटरफेस है जिसकी मदद से हम इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. It consists of menus, buttons and panels. There are many other things here. Krita interface consists of different panels that can be docked anywhere on the screen. So इसका जो इंटरफेस है उस पर बहुत सारे पैनल्स हैं जिसको हम स्क्रीन पे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं. This helps you change the layout of the screen according to your needs and convenience. So, screen का जो layout है उसे फटाफट हम change कर सकते हैं अपनी need या फिर convenience के according. Brushes are the most important tool in drawing. In Krita, there are total of 100 different brush colors that will give you an amazing drawing experience. So, Krita में hundreds of brush color हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं फॉर आवर ब्यूटीफुल ड्राइंग्स. दीज ब्रशेज आर यूज टू गिव डिफरेंट इफेक्ट्स टू द ड्राइंग. ये ब्रशेज हम यूज कर सकते हैं अलग अलग इफेक्ट्स देने के लिए अपनी ड्राइंग. Krita has a great feature. The brush stabilizer is here, which is used to enhance the smoothness of the brush stroke. So जैसे हम अपनी ड्राइंग नोटबुक में ब्रश के डिफरेंट स्ट्रोक्स देते हैं वैसे हम Krita में भी ब्रश स्टेबलाइजर की मदद से ये सारे स्ट्रोक्स दे सकते हैं. It has a huge built-in gallery and of vectors that can be used for drawing comic strip. इसकी जो गैलरी है इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम अपनी ड्राइंग में कॉमिक स्ट्रिप्स देने के भी काम में ला सकते हैं. Now, how to start Krita? For starting, we have to first click on the start button, then scroll the list to find Krita and click on Krita. So start button पे जाना है and then Krita को scroll करके उस पे click करना है या फिर in the search box type Krita and then click on the Krita option. So क्या करना है, search box में जाना है, वहाँ Krita type करके and then we can click on the Krita option. So here we can see both the ways are given. We have scrolled Krita and here we have searched the Krita in the search box. Now the components of Krita, the various components of Krita are as follows. So this is the screen of Krita. Our Krita screen is in front of us. It has various components, बहुत सारे इसके components हैं.
First, the top bar that we can see, that is the menu bar. वो menu bar है जिसमें हम menu bar से related या computer अपने Krita से related बहुत सारी चीजों को access कर सकते हैं. Next, below the menu bar comes the options bar. There are various options like undo, redo here. Now, below the options bar is a toolbar from where we can select the tools. Next, in the right side, you can see this is the panel of Krita in which we can do different type of editing. Here the brushes are also seen. The color brushes all are present in the panel. Now the white area here is our workspace where we can work in Krita. So first comes the menu bar. It is the topmost horizontal bar in Krita that consists all the menus such as file, edit, view, layer, filter, tools, etc. Next, options bar. This bar control panels lie below the menu bar and it displays options related to currently selected tool in the toolbox that you are working with. So जो current tool हम use कर रहे हैं वो सारे हमें options bar में मिलते हैं. Next, workspace. When you create a document in Krita, you see a wide rectangular area. तो जब भी हम कोई भी ड्राइंग या कुछ भी हम क्रिएट करते हैं वो सब कुछ जो है वाइट रेक्टेंगुलर एरिया में हमें दिखाई देता है. दिस एरिया इज कॉल्ड द वर्कस्पेस. इट इज द एरिया दैट डिस्प्लेज द इमेज फाइल दैट यू वांट टू एडिट. सो जो भी फाइल हमें एडिट करनी है वो हमें यहाँ पे वर्कस्पेस में दिखाई दे सकती है. द नेम ऑफ द इमेज फाइल अपीयर्स एज टैब एट द टॉप ऑफ द वर्कस्पेस. सो जो भी हमारे इमेज की नाम है वो हमें ऊपर टैब में दिखाई देता है वर्कस्पेस से ऊपर. द वर्कस्पेस इज ऑल्सो नोन एज कैनवस. सो वर्कस्पेस को जैसे हम कैनवस के नाम से भी जानते हैं. जैसे हम कैनवस यूज करते हैं अपनी ड्राइंग में वैसे हम यहाँ पे वर्कस्पेस को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स द पैनल. On the right side of Krita window, there is a separate area for the panel. Krita offers various panels that can either be grouped, stacked or docked. So Krita के राइट साइड में हमने देखा था पैनल्स है बहुत सारे जिसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं. वेरियस थिंग्स आर देयर एंड वी कैन आइदर बी ग्रुप, स्टैक्ड और डॉक. सो इसे ग्रुप में भी हम कर सकते हैं, स्टैक कर सकते हैं या फिर एक साथ डॉक भी कर सकते हैं. पैनल्स कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द स्क्रीन. पैनल को स्क्रीन पे कहीं भी हम मूव कर सकते हैं. अ पैनल दैट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड द फ्लोटिंग पैनल और डॉकर. सो वो पैनल जो कहीं भी मूव कर सकता है स्क्रीन में, दैट पैनल इज कॉल्ड फ्लोटिंग पैनल और डॉकर. नेक्स्ट इज टूल बॉक्स. बाय डिफॉल्ट टूल बॉक्स डॉकर अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द Krita विंडो. Krita का जो लेफ्ट साइड विंडो है वहां पे आपने देखा था ऑप्शंस के नीचे टूल बार था, टूल बॉक्स था. सो दिस इज प्रेजेंट at the left side of the Krita window. It contains the most commonly used tools. You can resize and move it as you desire. So इसमें कॉमन टूल्स है, बहुत कॉमनली यूज होने वाले टूल्स हैं और हम इसको रिसाइज भी कर सकते हैं एंड मूव कर सकते हैं अपने डिजायर के अकॉर्डिंग. Now creating a new file. How can we create a new file? To create a new file in Krita, follow these steps. So there are some steps that can be followed. Open Krita and create a new image file by selecting the file. So Krita को ओपन करना है, उसमें जो है न्यू इमेज फाइल को सेलेक्ट करना है इन द फाइल मेन्यू में जाके and from there we have to select new option. This will open the create new document dialog box. तो जैसे हमने न्यू ऑप्शन पे क्लिक किया सो नया डायलॉग बॉक्स वहां पे खुल जाएगा. Specify the details like name, width, height, orientation and resolution of the image file you wish to create. So ये सारी चीजें जो यहाँ लिखी है इन सबको हमें फिल करना है according to our choice and then you can create the file. After adding the required detail, click on the create button. So सब कुछ फिल करने के बाद हमें create button पे क्लिक करना है. The window with blank canvas will appear. So एक window appear होगी जो इसमें एक black color का canvas है. So that will appear in front of us. So here we can see all the options that we have used in the previous page. All are mentioned here. We have to go to the file tab and then this will appear and we can adjust the different orientations here and then click on the create button.
Adding an image. How to add an image in Krita? To open an existing image, follow these steps. So first we have to click on the open option in the file menu. So first we have to go to the file menu. From there we have to click on the open option, and this will open the image dialog box. So here we can see, here is the image dialog box. Select the image you want to insert. The image will be added to the workspace. So जो भी image हमें चाहिए उसको हम क्लिक करेंगे, और जैसे हमने क्लिक किया एंड ओपन पे किया यहाँ पे क्लिक, सो वो इमेज हमारी स्क्रीन पे आ जाएगी. Once the image is added, you can edit it using the various tools available in the toolbar. So जैसे ही इमेज जो है हमारे स्क्रीन पे आई, हम उसे एडिट कर सकते हैं with the different tools given here. Now let us learn about the selection and editing tools in Krita, using which you can bring a lot of transformation in your image. So अब हम जो है हमें पता चल गया कि इमेज को कैसे इंसर्ट करना है. अब हम पढ़ेंगे about the different selection and editing tools. Without this we cannot edit the picture. So हमें पता होना चाहिए सिलेक्शन टूल और एडिटिंग टूल कौन कौन से Krita में और उन्हें कैसे यूज करना है. So first comes the selection tool. The selection tool comes in handy when you want to alter a section of an image or paint it. So जब भी किसी इमेज के सेक्शन को हमें सेलेक्ट करना है विदाउट अफेक्टिंग द कंप्लीट इमेज, बिना पूरी इमेज को अफेक्ट किए हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं. दिस कैन बी डन यूजिंग अ वैरायटी ऑफ सिलेक्शन टूल्स दैट आर अवेलेबल इन. After selecting an area of the image, you can make the changes that you want in the selected area. So जो भी changes हमें चाहिए वो उस selected area में हम कर सकते हैं. So first comes the rectangular selection tool. We have learned about this tool in Paint also. So this is our rectangular selection tool, and here we can see this is the icon of rectangular selection tool. So ये क्या करता है, rectangular selection tool जो है पिक्चर को एक रेक्टेंगल फॉर्म में सिलेक्ट कर देता है. Here we can see here is the family of Peppa Pig and the mummy pig is selected here. इनके फेस को सिलेक्ट किया गया है with the rectangular selection tool. अब आपको ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है यही है, इससे ये पता चलता है कि इस डॉटेड लाइन के अंदर का एरिया हमने सिलेक्ट कर रखा, उसको हम चेंज कर सकते हैं. The rectangular selection tool is used to select the part of a picture in the rectangular form for retouching or to perform cut, copy, paste or any other edit option. तो ये सब कोई भी ऑप्शन हम इसमें से यूज कर सकते हैं in the selected picture. For that, first select the rectangular selection tool from the toolbox. So toolbox में से जाना है हमें, यहाँ से rectangular selection tool को चूज करना है. Place the cursor on the image. Image पे cursor जो है place करना है, and then we have to click and hold the left mouse button and then drag out the mark to select the required part of the picture. So हमें rectangular tools को select करना है, picture पे लेके जाना है और फिर left mouse button को press करके we have to drag जहाँ तक भी हमें select करना है. You will notice that a dashed border has covered the selected object as shown in the figure. Now you can perform any operation that you want in the selected area. So इस selected area में जो भी मुझे करना है अब मैं यहाँ से कर सकती हूँ. Now next is elliptical selection tool. Here we can see this is the image of elliptical selection tool and it is present next to the rectangular selection tool. क्या होता है? Elliptical selection tool allows you to select the elliptical area of the image. So image का एक सर्कुलर एरिया हम इलेक्ट्रिकल टूल की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं. So हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट दिस इलेक्ट्रिकल टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स, देन ड्रैग द लेफ्ट माउस बटन ऑन द इमेज एंड यू कैन सी दैट द इलेक्ट्रिकल मार्क अराउंड द इमेज. सो आप देख सकते हैं डॉट 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 बने हुए, डैश 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 डैश. इसका मतलब ये पेप्पा पिग और उसका जो ब्रदर है वो दोनों इसमें सिलेक्ट हो चुके हैं. नेक्स्ट इज आउटलाइन सिलेक्शन टूल. सो आउटलाइन सिलेक्शन टूल से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर की बारीकियों को हम सिलेक्ट कर सकते हैं. सो द आउटलाइन सिलेक्शन टूल वर्क्स एज अ फ्री हैंड सिलेक्शन टूल. सो इजिली आई कैन ड्रॉ, इसके पूरे फेस पे मुझे फेस चाहिए तो मैंने फेस पे एक लाइन ड्रॉ की है.
थ्रू दिस आउटलाइन सिलेक्शन टूल, फेस के आउटलाइन पे मैंने लाइन ड्रॉ की है, फ्री हैंड से की है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो जाए कोई बात नहीं। सो इस टूल का ये बेनिफिट है कि इससे हम इजीली जो है फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हैं। This tool is useful when you are working with a portion of the image that has smooth edge and curve. So ये जो टूल है इससे क्या कर सकते हैं, किसी भी पोर्शन को, ऐसे पोर्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके बहुत ही स्मूथ एजेस और कर्व्स हैं। अब देखो नोज है, नोज कितना कर्वी होता है, so उसे भी हम इजीली उससे सिलेक्ट कर सकते हैं। With what? With outline selection tool. So how can we select that? It is also in the toolbar, in the toolbox. So we have to open the image, then click on the outline selection tool in the toolbox, then press the left mouse button and drag on the picture around the part of the image to be selected. So image के parts की तरफ हमने उसको draw कर दिया. This will mark the selection. So जैसे जैसे हमने draw करेंगे वैसे वैसे selection हमारा mark करता जाएगा. Release the mouse at the end. So मैंने नोज से स्टार्ट किया था, अगेन मैंने पूरी पिक्चर फेस को ड्रॉ करके और मैंने नोज पे लाके उसे छोड़ दिया। You will notice that the selection as shown in the figure given below. So फिगर में जैसे सिलेक्शन दिख रहा है वैसे सिलेक्शन हमारा भी हो जाएगा। So this was all about selection. Now next selection tool is also here and this is similar color selection tool. Similar color selection tool क्या है? ये एक जैसे कलर्स को सिलेक्ट कर देता है। सो पिक्चर में जहां भी उसके जैसे जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी यहाँ पे सबके फेस पिंक कलर के हैं, उनके हैंड पिंक कलर के, उनके लेग्स पिंक कलर के हैं। सो जितने भी ड्राइंग में वो सेम कलर दिखेगा उन सबको सेलेक्ट कर दिया जाएगा, एक जैसे कलर को सेलेक्ट इसमें कर दिया जाएगा। यूजिंग द सिमिलर सिलेक्शन टूल यू कैन मेक सिलेक्शन बाय सेलेक्टिंग एनी पॉइंट ऑफ द कलर ऑन द इमेज। In simple words, this tool is used to quick select the area that has similar color. एक जैसे कलर है तो उसे वो select कर देगा। Follow these steps to select the part of the image using the similar color selection tool. So first we have to open the image, then click the similar color selection tool in the toolbox, then press the left mouse button. Left mouse button को press करना है and click on any point of color in the image. So कोई भी एक पॉइंट पे हम ले जाएंगे और वो कलर हर पूरे पिक्चर में जहां भी है वहां पे वो सिलेक्ट हो जाएगी। Observe that all the objects with similar color will be automatically selected. Now the changes you will make in one object will have similar effect in the other object with the same color. So जो भी हमने मान लो मैंने पिंक फेस की जगह मैंने उसमें रेड कर दिया, सो जहां कहीं भी वो पिंक था कलर वो सब जगहों पे रेड अप्लाई हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज आवर एडिटिंग टूल। अब हमने सिलेक्शन टूल्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम एडिटिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो क्रीटा फोटो एडिटिंग टूल आर यूज्ड फॉर रिटचिंग एंड एडिटिंग द इमेज टू मेक देम लुक अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग। सो पिक्चर को अट्रैक्टिव या अपीलिंग बनाने के लिए हम एडिटिंग टूल्स का यूज करते हैं। Krita provides various photo editing tools which are as follows. So बहुत सारे editing tools हैं। First one is crop tool. This is the picture of crop tool. Crop हमने अपने फोन में भी यूज कर रखा होगा, सबको पता होगा crop picture को कैसे करते हैं। So same feature is here of the crop tool. The crop tool is used to select the specific area that you want to focus on and remove the unwanted part of the everything that is outside the selected area of your selection in the picture. So जो भी एरिया हमने सेलेक्ट किया सिर्फ वो दिखेगा, बाकी पिक्चर का और पार्ट जो है वहां से हट जाएगा। So here we can see पेपा पिग की पिक्चर थी, हमने क्रॉप कर दिया इतने एरिया, तो हमें इतना एरिया दिखेगा, नीचे का और साइड का जो एरिया जो डार्क ब्लैक है वो हमें नहीं दिखेगा। So how to do this? First we have to open the image, then select the crop tool from the toolbox. So toolbox में से crop tool को हम select करेंगे, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करेंगे और ड्रैग करेंगे पिक्चर के ऊपर। रिलीज द माउस बटन व्हेन द सिलेक्शन इज कंप्लीट। जब हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा सो हमें उसे रिलीज कर देना माउस बटन को। द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज विद इन योर सिलेक्शन इज नोन एज द क्रॉप्ड एरिया। सो वो पार्ट जो हमारे सिलेक्शन के अंदर है इसे हम क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। To finish the cropping process, double click inside the selection or press the enter key.
सो क्रॉप करने के बाद या तो हमें एंटर की प्रेस करना है जिससे कि सिर्फ इतना पार्ट दिखे, बाकी पार्ट हट जाए, और दूसरा तरीका है वी कैन क्लिक इनसाइड द सिलेक्टेड पार्ट। सो इस पार्ट के अंदर भी हम डबल क्लिक कर देंगे तो भी जो है ये हमारा क्रॉप पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी। ऑब्जर्व दैट ओनली द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द इमेज विल बी लेफ्ट। हम क्या देखेंगे कि जो पोर्शन हमने सिलेक्ट किया बस वही हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट कम्स द ग्रेडिएट टूल। सो ग्रेडिएट टूल का इमेज आपके सामने बना है, ये ऐसा ही दिखता है। क्या काम है इसका? दिस टूल इज यूज्ड टू फिल एन एरिया विद अ रेंज ऑफ कलर्स। सो इसका क्या काम है? इससे अगर पिक्चर में कोई भी एरिया है उसका कलर आप चेंज कर सकते हो इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, एक स्पेसिफिक पैटर्न में। इट कलर क्रिएट्स अ ब्लेंड ऑफ 2 और मोर कलर। सो एक साथ 2-3 कलर को ये मिक्स कर देता है और ऐसा शो करता है कि वहां पे वो चीज थी। टू अप्लाई द ग्रेडिएंट इफेक्ट ऑन द इमेज, सो हियर वी कैन सी दिस पार्ट इज selected and now we are changing it. So first we have to open the image, then select the outline tool from the toolbox. Using this tool, select the portion of the image as shown in the picture. So picture में जैसे image के इस portion को select किया गया उसे हमें select करना है। Now select the gradient tool from the toolbox. तो toolbox में से हमने gradient tool को select किया। To select the gradient of your choice, click on the gradient button on the options window. So options window में भी gradient button है, वहां से हम select कर सकते हैं the gradient of our choice. Now here you can see previous picture में image को जिसको हमने select किया था वो कैसी थी, और अब हमने उसमें जब colors को merge कर दिया तो picture का पीछे का area change हो गया। After selecting the gradient, place the left mouse button and drag the gradient within the selected area. So gradient को select करने के बाद क्या करना है? हमें left button को press करके रखना है और drag करना है within the selected area. Selected area के अंदर हमें उसे drag करना है। Release the mouse button once the area has been marked. So जो area था अगर वो mark हो गया तो हमें button को release करना है। Observe that the selected area is filled with gradient of your choice. So जो भी हमने gradient choose किया उसके according picture जो हमारी fill हो चुकी है। Next is smart patch tool. So जैसे कि हमारे कपड़े में कहीं आपने देखा होगा कि आपकी मदर क्या करती है, अगर कोई कपड़ा कहीं से फट जाए तो क्या करती है उसमें वो पैच वर्क कर देती है, मीन्स कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कपड़ा लगा देती है जिससे क्या होता है वो दिखता ही नहीं है, या तो उस पर कोई एम्ब्रॉयडरी कर देंगे तो पता ही नहीं चलता कि वहां पे कभी भी वो फटा होता। आपने ऐसी बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी। सो सेम वर्क इज ऑफ द पैच टूल। स्मार्ट पैच टूल का सेम काम है। द स्मार्ट पैच टूल इज यूज्ड टू रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इमेज। सो इमेज में से जो भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट है उसे ये दूर कर देता है। This tool lets you remove anything that you want to remove from the image by simply drawing on it. So हमें यहाँ पे जहाँ पे ये बर्ड है यहाँ पे एक लीफ थी, उस लीफ को रिमूव करना था। So हमने इस टूल को अप्लाई किया, आप देख सकते हो एक पैच लगाया है और in the next picture the leaf has gone. अभी पूरा कलर सेम हो गया है बैकग्राउंड के जैसा। So this is the work of a smart patch tool. Now how can we use this? We have to select this tool from the toolbox. Now press the left mouse button and start to draw on the object you want to remove. So जिस भी object को remove करना उसमें हमने इसको draw किया and once finished release the mouse button. तो finish होने के बाद mouse button छोड़ना है and हम क्या देखेंगे कि the object is removed from the picture. So जैसे हमने mouse को छोड़ा हमने देखा object जो है picture में से गायब है। Next is clone tool. क्लोन टूल का क्या काम है? एक चीज को दो कर देना। So the clone tool in Krita is used for cloning one area of the image and copying it somewhere else. So image में कोई पार्ट है जो हमें दो बार चाहिए या 3 बार चाहिए, so हम उसे क्लोन टूल की मदद से डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। This tool can be used to transpose an object from one layer to another. So किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ये शिफ्ट कर देता है ये टूल। You can also create patterns from these objects. So हम पैटर्न भी बना सकते हैं इन ऑब्जेक्ट्स की वजह से। The clone tool in Krita is available as a brush. ये एक ब्रश की तरह हमें मिलता है Krita में and is used to clone
To use the clone tool, click on the brush preset panel, scroll and find the clone tool brush as shown in the figure. So यहाँ फिगर में हमें पता है ब्रशेस हमारे यहाँ पे कलर वगैरह सब यहाँ पे मिलेंगे हमें. So यहाँ पे हमें क्लोन टूल में जाना है and then we have to find this in the brush preset panel पे जाके हमें क्या करना है, क्लोन टूल को ढूंढना. So here is our clone tool. यहाँ पे हमें क्लोन टूल दिख रहा है, ऐसा दिखता है वो जैसा हमारे बुक में बना है. So यहाँ पे हमें दिख रहा है, so select करना है and then we have to apply to our picture. So जैसे हमने उसे select किया, so वो ऐसा गोल सर्कल जैसा हमें दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट सर्कल जैसा दिखाई देगा. Once the clone brush tool is selected, the cursor will look like this. So cursor हमारा ऐसा हो गया. Now press the Control key plus and click the clone tool cursor on the object you want to copy. So पहले क्या करना है, हमें कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, उसके साथ हमें जो है इसको जो है हम इस बर्ड्स के यहाँ से लेके ऊपर लेके गए और अब आपको क्या दिख रहा है, लाइट यहाँ पे बर्ड दिखाई दे रही है. नाउ क्लिक ऑन द प्लेस वेयर यू वांट टू मेक द कॉपी ऑफ द इमेज. सो बर्ड की इमेज को हम कॉपी कर रहे हैं, जो यहाँ पे ब्लैंक एरिया था वहां पे हमने कॉपी किया. द क्लोन टूल विल ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट फॉर यू. सो जैसे हमने इसको यूज किया तो क्या हुआ, जहां पे एम्प्टी स्पेस थी वहां पे अब एक बर्ड की पिक्चर बन गई है और वो बर्ड हमारी पिछली बर्ड की तरह सेम दिखाई दे रही है. Krita is a painting software that provides business opportunity to draw painting or sketches. पेंटिंग या स्केच करने के लिए हम Krita को यूज कर सकते हैं क्योंकि एक पेंटिंग सॉफ्टवेयर है एंड हम इस पे वर्क कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को इससे रन कर सकते हैं. Now let's quickly come to the recall time. Krita is a photo editing software. With a photo editing software, a simple looking picture can be enhanced to an extent that it looks as if captured by an expert photographer. ऐसा लगेगा एक expert photographer ने picture को click किया है. The selection tool comes in handy when you want to alter a section of the image or paint it without affecting the complete image. This can be done using a variety of selection tools that are available in Krita. So बहुत सारे selection tool है जिसकी मदद से हम selection कर सकते हैं, अपनी image को edit कर सकते हैं. After selecting an area in the image, you can make the changes that you want in the selected area. The rectangular selection tool is used to select an image or a part of it as a rectangle for retouching or to perform cut, copy or edit operations. The elliptical tools selection tool allows you to select the elliptical area of the image. Outline selection tool works as a free hand selection tool. This tool is used when you are working with a portion of the image that has smooth edges and curves. Using a similar color selection tool, you can make selection by selecting any point of a color of an image. In simple words, this tool is used for quick selection of area that have similar colors. So एक जैसे कलर हम similar color tool से use कर सकते हैं. The crop tool is used to select the specific area that you want to focus on and remove the unwanted part of everything that is outside the selected area of your selection in a picture. The gradient tool allows you to fill an area with the range of color in a specific pattern and it allows you to blend of two or more colors. The smart patch tool is used to remove unwanted object from the image and this tool lets you remove anything that you want from your image by simply drawing on it. The clone tool in Krita is used for cloning one area of the image and copying it somewhere else. This tool can be used to transpose an object from one layer to another. You can also create patterns for these objects. So children, let's quickly come to the book exercise. Here the first question is a check the correct. The first question says, the dash tool is used to create a blend of two or more color. For this, use the gradient tool. Which of the following tool is used to select a specific area that you want to focus? So, for selecting the specific area,
we use the similar selection tool. Now next question to your children. Next question says that the dash tool in Krita is available as a brush. So which tool is used here? This is a clone tool. This is available as a brush. Which of the following tool removes an unwanted object from an image? So for removing an unwanted object from an image, we use the crop tool. Which of the following is a crop tool? So the C1 is a crop tool. This is a picture of a crop tool. So I hope you have done this, children. Now let's come to the next exercise. Fill in the blanks. The selection made using the selection tool selects a portion of the image as a dash. What will be the correct answer? The selection made using the selection tool selects a portion of the image as a outline selection tool. Write it down. Outline selection tool. Next, third one is the second one is the outline selection tool is a dash selection tool. So outline selection tool is of which type of selection tool? Yes, it is a freehand selection tool. Next, the third question is the dash tool is used for quick selection of areas in images that have similar colors. So which tool we use here? We use the similar color selection tool. Here we have to write similar color selection tool. It is similar color selection tool. Fourth question is the dash tool lets you remove the unwanted part of everything that is outside the selected area of your selection in the picture. So which tool we use here? We use the crop tool. Crop tool does this work. Now the fifth question is the dash tool lets you remove an unwanted object from the picture by drawing on it. So किसी भी picture के ऊपर हम draw करके उसको remove कर सकते हैं. For that we use the smart patch tool. So write down here smart patch tool. Now true false, write T for true and F for false here. The selection tool is used on image with portion that has smooth edges and curves. Yes, this is true. Now the gradient tool allows you to fill an area with a range of colors in a specific pattern. This is also true. The clone tool in Krita is available in the brush preset panel. Yes, true. Using similar color selection tool, all the objects with the similar color cannot be automatically selected. False. And the last one is using the clone tool, an unwanted object can be removed from an image. This is also false. So these were the true and false, children. Now let's quickly come to the question and answers. First question is, what is the significance of selection tools in Krita? So selection tools in Krita are used for selecting the part of a drawing where we have to do the editing and enhancing of the picture. So this is a selection tool. Now the next is, explain the utility of outline selection tool. So the outline selection tool is a freehand selection tool. This is a freehand selection tool
and with this we can easily select the part of the area that has curves or edges. So these type of pictures can be selected by using this outline selection tool. Now, what is the difference between crop tool and smart patch tool? So we know this crop tool looks like this. By this we can crop the picture, and after cropping, what will happen? The outside part of the picture will not be seen to us. Only the selected area will be available for us, and that will be seen to us. Next, the smart patch tool. Smart patch tool, it does the work of a patchwork in our picture, and by this smart patch tool, what we can do? We can put the patch on the area that we want to remove. For removing a part of a drawing and blending it with the other picture, we use this smart patch tool. Next is write down the steps to use the smart patch tool. So for using the smart patch tool, first we have to go to the toolbox. From there we have to select this smart patch tool, and then we have to bring our mouse pointer to the picture where we want to apply this tool, and then left click the mouse button and drag it till the area is selected, and then this smart patch, and then we have to remove our finger from there, and what will happen? This smart patch tool will do its work. Now, what is the fifth question is, what is the use of crop tool? So crop tool is used to remove the unwanted part of the drawing that is not required. So as I told you, crop tool is used for cropping a picture, and the outside area that is outside the crop tool will not be visible to us, and the area that is inside the crop tool will be only visible to us. So children, this was all for today. In this chapter, I'll be waiting for you in the next chapter with a new video. Till then, stay lit.